हेलो बच्चों, आपने अब तक हमारे चैनल के 2-3 वीडियो देखे होंगे जिससे आपने शुरू किया होगा कि क्लास 12 की पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स में जो टॉपिक आपके सामने लेके आए वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर स्टार्टिंग और डीलिंग विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू सी कि वेदर इट इज चार्ज और इट इज एप्रोप्रिएशन। ओके, मीन्स हमें जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या दिया है, कि अगर वो चार्ज है पार्टनरशिप फॉर्म पर तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे अलाउ कराना ही होगा, इधर इट इज प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो उस कंडीशन में हमें अलाउ उसे तभी कराना होगा जब वहां पर प्रॉफिट होगा। मीन्स जब एप्रोप्रिएशन होता है उस कंडीशन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट की लिमिट तक ही अलाउ कर सकते हैं। मींस इंटरेस्ट इज अलाउड बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। ओके, बिफोर इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ सी वन बाय वन ईच ऑफ केस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। In this case number 1, whether partnership deed is silent. If partnership deed is silent, what is this? No interest on capital will be allowed. Means अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेंट में कुछ भी नहीं लिखा है या डीड एब्सेंट है, उस कंडीशन पर हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करानी है। केस नंबर 2, when deed provides for interest on capital but silent on charge or appropriation। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंडीशन आपके सामने आएंगी। पहली बात कि डीड ने कह तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन डीड में इस बात को नहीं बताया है कि अगेन वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो हमें क्या मानना है, हमें उसे एप्रोप्रिएशन ही मानना है, उसे चार्ज नहीं मानना है। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है कि आपको अलाउ कराना है तो क्या मान के कराना है, एप्रोप्रिएशन मान के अलाउ कराना है, अगर वहां पे चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं बताया गया है। तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि अगर उस कंडीशन पे लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। सेकंड थिंग, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस जो अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। It means sufficient amount is available for given interest on capital. तो क्या करेंगे हम, full interest is provided. Third thing, when in profit before interest is less than interest on capital, means available in profit before interest is it is less than the interest on capital. So we have to allow that profit up to the extent of profit, where up to the limit of interest on capital, means allowed in the ratio of interest on capital only. Third thing, whether deed provides this is a charge, means if deed is provided that interest on capital is charged against the profit, so we have to provide entire interest on capital either there is profit or not. Clear? Means once again you can warm up with these basic fundamental rules of interest on capital. First, we have to check it is charge or appropriation. If there is charge, we have to allow at any cost, either there is profit or loss. Second, if there is appropriation, it is allowed up to the limit of profit, means it is allowed but up to the limit of profit. We can summarize this table. In first case, when partnership deed is absent, means we have not provided, we will not provide interest on capital. Second, when deed is present but it is not mentioned, it is charge or appropriation, so we have to assume that this is the appropriation, means if there is loss, no allow interest on capital. Second, in case of profit before interest is more than interest on capital, we have to provide full interest on capital. Third, when profit before interest is less than interest on capital, we will provide up to the ratio of interest on capital. And third thing, when deed provides that this is the charge against the profit, so we have to provide entire interest on capital, either there is profit or loss. Now we are going to discuss this topic in numerical aspect. अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से जो अभी तक हमने थ्योरी देखी उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखेंगे।
ये सामने आपको प्रॉब्लम है, A and B are the partner and their profit sharing ratio is 3:2 and the capital contributed by the partners are rupees 2 lakhs and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following cases. Case number 1 is deed is absent and the profit is given 50,000. So what we have discussed earlier, if there is absent of deed or deed is silent in case for interest on capital, we will not going to give any interest on capital and we will distribute all the profit which is given by profit and loss account to the partners in their profit sharing ratio. Means profit transfer 50,000 and interest on capital it is not going to allow, so entire profit is transferred to partners capital, okay, in their profit and loss sharing ratio. In second case, if deed provides interest on capital at the rate 8% and loss is 50,000, so by PL account it is loss 50,000. In case of loss, we will again deal. This is the application. So in case of loss and no interest on capital, again it is provided. So this loss will transfer to partners capital account again by partners capital account, and we will transfer this 50,000 in their PSR, that is 30,000 and 20,000, 3:2. Okay. In case number 3, if deed provides interest on capital at the rate 8% and profit is 50,000, so just see, interest on capital is provided and enough profit is there. So first we will calculate interest on capital. Interest on capital A and B. A's capital is 2 lakhs and B's capital is 1 lakh. So take 8% of both the capital, that is 16,000 and it is 8,000. Okay, we will transfer this in their PL application account. 16,000 and 8,000. It is gross 24,000. Rest 26,000 balance will transfer to their capital account in their PSR. Okay. In fourth number case, if deed provides interest on capital 8% and the profit is 15,000. As you know, your interest on capital is how much? 24,000 and the given profit is just 15,000. So what we have discussed earlier, we will distribute the profit up. We will distribute the profit up to the interest on capital ratio. Means we will take the interest on capital ratio, that is 16,000 and 8,000. It is 2:1. So we will give entire 15,000 to the partner because this profit is less than the interest provided. So to partners capital account A and B and take the ratio of 15,000. 15,000 is available surplus and as we know interest on capital is 24,000. It is not so enough profit to distribute. So we will give the interest on capital up to the extent of profit. That profit is 15,000 and the ratio of interest on capital is 2:1. So we will give this to A and B in their PSR. Sorry, in their interest on capital ratio, that is 2:1. It is also PSR. So it is 10,000 and it is 5,000. 2:1. So 10,000 and 5,000. It is 15,000. Okay. In fifth case, the deed provides interest on capital at the rate 8% and the profit is 15,000. And deed क्या कह रही है? It is charge against the profit. Charge against the profit means if there is loss or sufficient profit is not available, we have to give this interest on capital at any cost because this is charge against the profit. So just transfer profit PL account. It is 15,000
and 2 interest on capital as we have calculated earlier, A and B 16,000 and 8,000, it is 24,000, and rest 9,000 it is loss transfer to partners capital A and B in their PSI. So as we have discussed entire theory and this is the practical application of those theories, so just go through one by one. If deed is silent, so what we will do? No interest on capital is allowed. Second case, if deed is at present, but this is not given that interest on capital is appropriation of charge, so we will if this is loss, first case loss, and in case of loss, no need to prepare PL appropriation account, so entire profit transfer to entire loss debited to partners capital account. In third case, if deed provides interest on capital 8% and the profit is 50,000, means sufficient amount of profit is available, we will give full interest on capital. In this case, deed provides 8% but profit is not sufficient, so we will give the interest on capital up to the limit of profit available. And in last case, interest on capital is charged against the profit, so it is provided and entire interest on capital is given, either there is profit or loss. अब हम आपके सामने अगले टॉपिक को लेके आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। मींस इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, तो उसके इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या करनी प्रोविजंस होंगे? सबसे पहली चीज, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मींस इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, मींस that in that case interest on loan will be the charge against the profit, means either it is profit or loss, firm has to pay that interest on loan. Second thing, it is always debited in PL account. It is not the matter of appropriation, as you know, so it is debited in the PL account. Third thing, it is not credited to the partner's capital account. Again, same reason, it is not appropriated, it is not the part of appropriation, that's why it is shown in partner's capital account due to charge against the profit. The journal entries regarding this: interest on partner's loan account debit to partner's loan account, and second, transfer to PL account, profit and loss account debit to interest on partner's loan account. Next case is interest on loan taken by a partner from firm. This is something different thing. Means loan is taken by the partner from the firm, means firm से partner ने लोन लिया है, ऐसी कंडीशन पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? वन थिंग नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, इट इज मस्ट केप्ट इन माइंड कि देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर, बट indeed this clause will be provided by the partners and it will be treated as charge if deed is provided. So in that case it will be the charge against the profit, charge for the partners. And third, this interest will be income of the firm. ये जो interest आएगा वो firm की income होगी, यानी PL account में ये show होगा. इसकी entry देख लें आप, partners capital account debit to interest on partners loan account. Again it is transferred as income to the PL account. Interest on partners loan account debit to profit and loss account. The next main case is रेंट पेड टू अ पार्टनर, मींस रेंट पार्टनर को पेड हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी वो हमने हायर की है, तो ऐसी कंडीशन इट इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मींस आइदर प्रॉफिट और लॉस इट हैज टू बी पेड. लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, रेंट टू अ पार्टनर इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रेंट पेएबल अकाउंट. In case of loss, no profit and loss appropriation will be prepared, so profit is to be appropriated directly. Clear? अब हम लोग next case देख रहे हैं, guarantee of profit to a partner. Okay? This guarantee may be given by one partner or all the partners in a particular ratio or their own PSR. ठीक है? तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. A, B, C पार्टनर है
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:3:2 है, और सी जो पार्टनर है उसको गारंटी दी गई है कि 10,000 पर प्रॉफिट पर ईयर से मिलेगा। इस साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 40,000। ये प्रॉफिट कैसे बटेगा इसके लिए पूछा जा रहा है। अगर ये गारंटी ए ने दी है और या ये गारंटी ए और बी ने 3:2 रेशियो में देने को कहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट जो गिवन है 40,000 उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 20,000, 12,000 में 8,000। तो हम देख सकते हैं कि सी के साथ क्या है 2,000 की डेफिशिएंसी है, तो पहले सी को 2,000 दे दिया जाएगा, 10,000 हो जाएगा, मिनिमम गारंटी पूरी हो जाएगी। ये गारंटी किसने दी, ए ने दी, इसलिए ए के शेयर में से 2,000 माइनस हो जाएगा और ए को 18,000 मिलेगा। तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया 18,000, 12,000 और 10,000 का। सेम केस अगर यहाँ पे ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी होती तो क्या होता, तो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आया 20,000, 12,000, 8,000, अगेन 2,000 डेफिशिएंसी बनी, तो ये 2,000 डेफिशिएंसी कैसे होगी, ए 3/5 और बी 2/5 देंगे, तो कितना है 1200 एंड 800। तो ए में से आप क्या करेंगे 1200 माइनस कर देंगे, बी में से 800 माइनस कर देंगे और सी में 2,000 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉफिट का ए, बी और सी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गारंटी ए और बी दोनों ने मिलकर दी थी। ठीक है, इसी में एक तीसरा केस आता है कि यदि उस केस में लॉस हो तब क्या होगा। ध्यान समझेंगे, लॉस जो होता है वो एक चार्ज है, लेकिन दूसरी चीज ये मिनिमम गारंटी भी एक चार्ज है, तो जब दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे तो दोनों का कंट्रीब्यूशन 10 पार्टनर्स को करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे केस ए और बी आर द पार्टनर्स, देयर पीएसआर 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर and they guaranteed a minimum ₹2 lakh profit to C. The deficiency will be borne by A and B by 4:1. The loss of the year 1 lakh. तो as you know ₹1 lakh loss है, तो लॉस को हमने 1/5 पहले C को दे दिया, कितना है 20,000 रुपए, फिर 1 लाख का बचा 80,000, 80,000 का 3/5 इनको और B को 2/5 हमने दिया, तो कितना है 48,000 एंड 32,000। सी के हिस्से में कितने की लॉस आ रही है 20,000 की, जबकि उसे कितना मिलना चाहिए था 2 लाख प्रॉफिट मिलना चाहिए था, यानी 20,000 का ये लॉस प्लस 2 लाख प्रॉफिट, टोटल कितना होगा 2,20,000 रुपए, ये सी को चाहिए। ठीक है, और ये 2,20,000 कौन देगा, ए और बी देंगे। क्यों, क्योंकि दे हैव कमिटेड टू गिव एंड इन विच रेशियो, इन 4:1, दैट इज 1,76,000 and 44,000 they will give to C by their own resources.